Welcome to this lecture. In this lecture, we are going to discuss group acting on itself by left multiplication. Okay, so let अभी तक हमने जो कंसिडर किया था वो था G एक ग्रुप और A was any non empty set. Okay, अब क्योंकि जी ये जो ए है जिस पर ग्रुप एक्ट कर रहा है दैट कुड बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, तो उस केस में हम ए को जी भी कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कंसिडर किया, दिस एनी नॉन एम्प्टी सेट इज जी इटसेल्फ। जब ऐसा सिनेरियो है जहाँ पर ग्रुप खुद पर ही एक्ट कर रहा है तो ये इस तरीके का डिस्कशन हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो लेट जी बी अ ग्रुप acting on itself by left multiplication. Left multiplication, और ये जो multiplication है that is defined as G star A becomes GA for all G belongs to G, and क्योंकि जिस पर एक्ट कर रहा था उसको हमने A से डिनोट किया था and now this A is G itself. Okay, where you can see where this GA denotes the product denotes the product of two elements of G। अब इस बात का सेंस ये है कि सपोज हमें जो ग्रुप है वो ऐसे दे रखा है G प्लस विद द एडिशन ऑपरेशन। ओके, तो इन दैट सेंस G स्टार A विल बी G प्लस ए, तो यहाँ पर प्रोडक्ट का मीनिंग ये हो जाएगा एंड दिस वी कैन कॉल लेफ्ट एडिशन। ओके, and in more precise way we can say this is left translation. Now suppose in some scenario we are given with this operation multiplication, then in that case G star A becomes G multiplied by A. So this is the left multiplication जहाँ से ग्रुप का एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहा है या फिर ऑपरेट हो रहा है उसी से ही एक्शन लेफ्ट है या राइट वो डिसाइड होगा। ठीक है, similarly if we are given with the composition operation then this product becomes then this product becomes G operated with A. Okay, so this is how we can understand that what GA is representing. Okay, now we can easily verify that this star operation follow the two axioms for group action. You can see if we take G1 and G2, suppose G1, G2 and A all are element from G, then G1 star Z2 star A is, by the definition, it is equal to Z2A. So it will be Z1 star G2A, and this will be equals to G1 G2A. Now you can consider this G1 G2A is some H, where H equal to product of G1 G2 and which is element of G. Okay, so this is how we can identify that this is equal to this thing, and you can write this is as G1 G2 star A. Similarly, for the second axioms we can write E star A as EA, and EA is the same for all A belongs to G. आइडेंटिटी एलिमेंट से जब भी ऑपरेट करेंगे हमेशा सेम एलिमेंट ही आएगा, एंड दैट इज द सेकंड एग्जाम्स इन द केस ऑफ ग्रुप एक्शन। ओके, नाउ यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो एक इम्पोर्टेंट कॉन्सिक्वेंस है। देखिए, लैबलिंग, इट सेज सपोज G has finite
order. Okay, finite order है, that means it has finite number of elements. अब इसका जो एलिमेंट का स्ट्रक्चर है, यू कैन सी, सपोज दिस इज आवर ग्रुप एंड इट कंटेन्स finite number of elements. Suppose elements are 1, 2, 3 and so on, n elements. अब इन n elements में से इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा हो सकता है? वी हैव लाइक in some scenario we have E, A2, A3 and so on, AN. In some scenario we have the element like E, G2, G3 and so on, GN. ओके, ये कुछ भी स्ट्रक्चर हो सकता है, ये एक फाइनाइट ऑर्डर का सही ग्रुप है, तो इसका मतलब इसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे. So in the labeling, we say this is our element, this identity element is our first element. The second element is A2 and हम जब भी A2 को represent करेंगे तो उसकी जगह हम केवल 2 लिखेंगे. Okay? If we write A3, then A3 की जगह we are going to write 3 only. Okay? तो basically हर एक एलिमेंट को हमने एक लेबल दे दिया. दिस इज आवर फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज सेकेंड एलिमेंट, दिस इज थर्ड एलिमेंट एंड देन nth एलिमेंट. Likewise, this is first element, this is second element, this is third element and so on. तो इस तरीके के एलिमेंट के साथ डिस्कशन से अगर हम कंपेयर करें, देन द डिस्कशन विद द नंबर्स फ्रॉम 1 to n इज मोर ईजियर देन द डिस्कशन विद दिस काइंड ऑफ सिंबल्स. ठीक है, तो जब कभी भी हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है एक ग्रुप जी में, इन दैट केस द एलिमेंट्स ऑफ जी कैन बी लेबल विद द इंटीजर 1, 2, 3 एंड लाइक दिस. ओके, एंड इन दैट केस जब हम इस एक्शन के लिए परमुटेशन, रिप्रेजेंटेशन एंड इंड्यूस्ड परमुटेशन की बात करेंगे, तो देखिए इसको हम वैसे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, बट यू कैन सी कि जब हम सिग्मा जी ऑफ सम सपोज ए आई की बात कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ए जे पर मैप होगा. बार बार हमें ए आई या फिर ए जे लिखने से बेहतर है और इजी है ताकि हम इसको एज ए परमुटेशन भी देख पाए. सो वी कैन राइट दिस एज सिग्मा जी, क्योंकि इसमें ith जो एलिमेंट है दैट इज गोइंग ऑन jth एलिमेंट, सो वी आर राइटिंग सिग्मा ऑन आई इज सेम एज j. तो jth इंडेक्स इज गोइंग टू बी वेरी. ठीक है, तो ये बात हुई लेबलिंग की जिसके अंदर हमने ग्रुप के एलिमेंट्स को लेबल किया है 1 to n. अब ये हेल्पफुल किस तरीके से, उसके लिए लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल. एग्जांपल सेज let g be equal to e a b c, the client for group. Okay, be the client for group acting on itself by left multiplication, then find induced permutations and permutation representation associated to the group action. ओके, यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं यूजिंग labeling. ठीक है, so how we can proceed for this scenario where we are having the finite order group. So you can see, so we label the elements
elements of group G, that is equal to A, B and C, is 1, 2, 3 and 4. तो E के लिए हम 1 यूज़ करेंगे, A के लिए हम 2 यूज़ करेंगे, B के लिए we will use C, and for C we are going to use 4. Okay, so this is how we are labeling A 1 2 3 4 1 2 3 4 2 E, A, B and C respectively. Okay, अब इसके लिए if we want to identify what is sigma induced permutation, then you can see, पहले हम बात करते हैं induced permutation की. Induced permutations. So consider, कोई भी हम एक एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं. कंसिडर A belongs to G, क्योंकि G पर ही एक्ट कर रहा है बाय द लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन, देन द G स्टार A विल बी GA. ओके, लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन. तो इस केस में G, कंसिडर G, A belongs to G, then we define sigma A G to G. और अर्लियर ये कैसे डिफाइन होता था? सिग्मा G डिफाइंड फ्रॉम A to A. So that was permutation on A. Now this is a permutation on G itself. So you can see, if we find what is sigma A on E, so it will be E star A, and that is same as EA. Let me write first every element, then EA A equal to A star A, and that is A square, and which is equal to identity which is equal to A. Then sigma A on B, it becomes B star A, and that is equal to BA, which is equal to C. Then sigma A on C becomes C star A, and that is equal to CA equal to B. I think you must aware about the operation in client for group. So we have this operation E, A, B, C, then E, A, B and C. So if we multiply with A, then we have E, A, B and C, then A, E, C, B. B, BA will be C, B square is E, BC is A, then CE is C, CA is B, CB is A, and C square is E. So this is how you can identify the client for table. We have this table. तो अभी जो हमने ऑपरेशंस लिखी हैं वो इसी टेबल से लिखी है. This is the dot multiplication operation. Now in the scenario where we have already labeled E A B C by 1 2 3 4, then under this sigma A permutation, if we see that sigma A और E का मीनिंग क्या था? 1. तो 1 की इमेज जो है वो कहाँ जा रही है? A पर, एंड A is 2, तो sigma 1 becomes 2. Then in this scenario, sigma A of 2 is going on E, so it is going on 1. Then sigma A of B is 3 and it is going on C, that is 4. Then sigma A of 4 is being 3. So here you can see under the sigma A permutation, we have the images like 1 becomes 2, 2 becomes 1, 3 becomes 4 and 4 becomes 1. तो
अगर हम इन सब परमुटेशन की इमेजेस को आइडेंटिफाई करें, देन वी हैव this one, that sigma a is nothing but the permutation in under which 1 goes to 2 and 3 goes to 4. So this is the sigma a permutation. Similarly, if you consider b, then we have the sigma b operation. For b belongs to G, we define sigma b from G to G. तो इस केस में सिग्मा बी ऑन ई, दैट इज ई बी, क्योंकि ई स्टार बी हमें गिवन है, एंड दैट इज इक्वल टू बी. देन सिग्मा बी विथ ए इज सेम इज ए बी एंड ए बी इक्वल टू सी. Sigma b on b, that is equal to b b b b, and that is equal to b square, which is equal to e. Then sigma b on c is same as cb, and that is equal to a. अब अगर हम यहाँ पर लेबल्स को यूज़ करें, देन सिग्मा बी ऑन फर्स्ट इज बिकम 3, क्योंकि बी को हमने बोला है 3. ओके, देन सिग्मा बी on 2 is being 3, a b and c. This is 4. Then sigma b on 3 is being 1. Then sigma b on 4 is being 2. So अगर हम यहाँ से इसका sigma b will be same as 1 goes to 3, 3 goes to 1, then 2 goes to 4 and 4 goes to 2. So it is like 1, 3 and 2, 4. So this is the sigma b permutation, or you can say the induced permutation by b.